To you, sir. Thank you, sir. Okay, Ji, now I'm leaving. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Ma'am, when will next session will start? 2:30. Okay, ma'am. Okay. Participants, you can leave if you want to and join. How are you feeling? Give me a thumbs up or a thumbs down right now. I'm waiting for your reactions, all the participants. All right, so I got one thumbs up. One more. Great. So I believe everybody is up and agile, and the workshop since yesterday has been great. It's kudos for the whole IQAC team, as I can see lot many thumbs up coming up. All right. Oh, so you want to say something? I have my friend here. Hi, he says hello to all of you. So he says, stay green and stay healthy, all of you. And please wear masks whenever you go out. I believe IQAC team contacted me and not you. So you can come back later. I'll see you, buddy. Okay. So we begin with our workshop on pedagogy and communication skills. I'll share my PPT with all of you now. All right, just let me know if you can see the whole screen. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. All right, great. So I begin with my presentation now. Hi, everyone. I am Dr. Jasmine Anand, as already introduced to you by Mukesh sir. And we begin with our pedagogy session now. Now, you really need to know what are we up to? What are we going to do in this session? So one thing we need to know about the goals of any session, of any teaching, any classroom setting that we are going to construct. So we need to identify and review any of our sessions. So with this session, with this workshop, you're going to identify and review your own pedagogy. अब तक आप कैसे पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे? So it's a reflection on your own pedagogy. You're going to recognize the need to change and upscale. क्या आपको लगता है कि मैं इसको बेहतर और बना सकती हूँ, इसको और बेहतर कर सकता हूँ? How well I can interact with my students. So you're going to evaluate also not only your students, but your own self side by side. Then we are also going to experience various activities that would aid your pedagogy. You will also know your learning style through this workshop. And then we will proceed on to differentiation between pedagogy and andragogy. अब तक हम pedagogy की बात कर रहे थे, पर क्या हमें pedagogy आजमानी भी है, या कुछ और नया आया है, या हमें कहीं और सोचना है, कुछ और अपस्केल करना है. So with this we are going to formulate certain new learnings. So what's the agenda? How are we going to proceed? हम एक माइंड जोन एक्टिविटी से शुरू करेंगे, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, देन वी विल हैव अ स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी, देन आई वुड आल्सो आस्क यू टू डिस्कस, volunteer a bit, we would also discuss again, and then we would also know how we need to change from pedagogy to andragogy and how is it classified, how is it different. Then we have your exit ticket from the workshop for today, your biggest takeaway. All right, let's take a break. So I request all of you to have a glass of water right now. It's very important. One thing, please, can you also see my face side by side, or you can just see the slide? We can see your face also, ma'am. All right, wonderful. So please grab your glass of water. I have mine, and I would tell you to do the same. Now, water is very necessary. एक गर्मी है, दूसरा हम सब टीचर्स हैं, हमें बोलने की बहुत आदत है और बोलना ही बोलना हमारा काम है. So we rarely are careful about our own oral hygiene. And you know, I myself have suffered a lot because of this. मुझे laryngitis हो जाता है.
So always when you begin your lecture, hydrate yourself or take sips in between. And secondly, the mind zone activity that we are going to begin with, it needs hydration. So you are already over with your lunch, please hydrate. I guess it's time up for your water break. So let's deep breathe a bit. Inhale, then exhale. Now we are going to begin with the first activity, that's mind zone activity called as EFT, Emotional Freedom Technique. So what are we going to do? We are going to be more alert. We are going to be all okay wherever we are, अपने सोफा पे, अपने बेड पे, अपने क्लासरूम पे, अपने घर पे, आसपास बच्चे चिल्ला रहे हैं, इसके बाद खाना बनाना है, कोई असाइनमेंट्स करनी है, IQAC टीम ने दे रखी है. So there is lot on our head. But right now we need to focus. So we'll focus with this activity of EFT. What you have to do, these are 10 pointers that you need to keep in mind. You can also see me side by side. The first is karate chop. So you'll take your hand like this, left hand, and right hand, you're going to chop it off like this. Just like karate people do it. So first is karate chop. Second is top of your head. You need to tap your head at least 10 to 12 or 15 times regularly. Look that you should not hurt yourself. Still, you should feel the tapping here. The second is people who are wearing specs like me, they need to remove your specs. The second is your eyebrow place. Sorry, this is the third one. Second one was this one. Then the fourth is your side of the eyes. Then your under eye. Then your under nose. And then your under chin. Again, the collar bone. यहाँ पे आपको अपनी bones feel हो रही होंगी. उस पे just tap it like this. Then your collarbone, underarm से सिर्फ नीचे, you tap like this. And then the karate chop again. So these are the total 10 points. Is it clear to all of you through this chart? Yes or no? Can I hear? Unmute yourself, please. Yes, ma'am. All Yes, right. ma'am. Perfect. We move on then. So this is the list of EFT tappings, the 10 tappings, the karate chop, your head, your eyebrows, side eyes, under nose, then your chin, then your collarbone, then your underarm, then again a karate chop. So let's begin with the exercise and all of you are going to do it with me. जैसे हम ये exercise करेंगे, साथ साथ हम कुछ affirmative sentences भी बोलेंगे. And I request all of you to unmute yourself and do this exercise. आपका अगर वीडियो ऑन नहीं है, it's okay, but please unmute yourself and speak these lines side by side. Do this exercise with me. So we begin now with the karate chop. I thank you, God, for all the bounties and happiness around. I thank you, God, for all the bounties and happiness around. I'm attending the FDP and I look forward to new learnings. I am attending the FDP and I look forward to new learning. I'm all relaxed and open to new and changing perspectives. I'm all relaxed and open to new perspectives. I am fresh and passionate towards my job. I am fresh and passionate towards my job. I'm happy that I'm going to meet and collaborate with new people. I'm happy that I am going to meet and collaborate with new people. I am thankful to God that I'm blessed today and not suffering due to COVID. I am thankful to God that I am blessed today and not suffering due to COVID. Whatever the problem around me, it will soon be tackled and I'm all good.
Whatever the problem around me, it will soon be tackled and I am all good. Tackled and I am all good. I'm receptive and pray that my learning evolves as I evolve. I am receptive and pray that learning evolves as I evolve. As I evolve. I'm happy, motivated, and in good health. I am happy, I'm happy, motivated, and in good health. I'm thankful to God that I'm okay. I pray for the whole world and I'm happy for a new learning experience through the FDP. I'm thankful to God that I am okay. I pray for the whole world. I am happy for a new learning experience through this for a FDP. new learning experience through this FDP. Take a deep breath again. Inhale. Slowly exhale. So, okay, people who were tapping with me and who were saying these things with me, these affirmations, क्या आपको कुछ लगा है अपनी body में change? Have you felt anything now? Energetic. You hydrated. What else? Anybody else? किसी को दर्द हो रही है? Yes. Feel motivated. Okay, you're motivated more. Anybody else? अभी नींद आ रही थी मैडम, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है. अच्छा, तो जिसको नींद आ रही थी खाना खाकर वो जाग गया है. जो थोड़ा थका हारा था, जिसको लगेगा पता नहीं कैसा एक और सेशन है, इसको तो बंद करके ही सुन लो या साइड लगा दो, अटेंडेंस मिल जाएगी. So now you are so much keen. Okay, let's see what happens. And perhaps after this exercise, you're all enthusiastic, you are all alert, all activated. Okay, now we do a bit of brainstorming again as you're all active now. So it's a Jamboard exercise. Just see if you can click the Jamboard here, the link. Else, I request Dr. Maninder to post the link on the chat box, please. Just a bit, ma'am. Please wait. क्या बाकी लोग खोल पा रहे हैं directly screen से? The link was embedded. See if it works. It's not opening, cursor, ma'am. it's not opening. Okay. The team is going to help you out with that. Okay, meantime, just think, why did you become a teacher? क्या वजह थी कि आप टीचर बने, सब लोग प्रोफेसर बने? इस प्रोफेशन में क्यों आए? ये करियर चॉइस आपके लिए क्यों जरूरी थी? आप सोचो एक एक अपने लिए, बिकॉज मैंने सोच रखा है और मैंने लगा रखा है that I love to interact. Okay, are you able to open the Jamboard now? I see people are coming up. Great. अब आप लोग Jamboard पे एंटर हो गए हो, आपको ये पेज दिख रहा है, why did you become a teacher? Now what you have to do, अपने ही कंप्यूटर्स, अपने ही सेल फोन से आप क्या करेंगे? आपको दिख रहा है मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है? You can see this is a pen. So people, whatever you think about this question, you know, you want to draw something, you want to write, you can use this pen like this, right? If you want to erase, you can use this eraser. You can also select the color of your choice. Okay, somebody started doing it. Now, you know, you can also have a sticky note. For example, I am selecting the pink sticky note and I am writing money. Maybe I required money. So hence I had opted for this job. So one is money, and I told you I love to interact. So why did you become a teacher? I can see, you know, maybe somebody likes to doodle and scribble a lot or wants to work on blackboard, शायद इसलिए वो teacher बने. कोई smiley दिखा रहा है, perhaps वो बहुत जिंदा दिल इंसान है, तो इसलिए वो teacher बने. कोई बोल रहा है passionate about teaching. That's why, you know, he or she is so passionate, so engrossed, absorbed into teaching, into pedagogy, into interacting with people, into sharing the knowledge that he or she became teacher. And there is one naughty person in our class who's trying to move the picture again, right and left, experimenting with the things.
And what else? Please put your sticky notes or maybe write something. You can also use the text box. यहाँ पे आप text box में भी कुछ लिख सकते हैं इस तरह से. Choose it for your own self. Please do it. You can also choose a sticky note. Okay, there is another one. So somebody says it's a noble profession and I got motivated by my school science teacher. Great. तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में कोई आइकन था जिससे आप बहुत इम्प्रेस थे. So I have another one. I love to meet new thinking among the youngsters and setting thoughts and innovative ideas from the youth. All right, great. Anybody else? Fill in the Jamboard. Okay, opportunity to interact with young minds. That's it. Any other reason? Somebody is trying to write something but has not written anything. Okay. All right, so these are the major motivations. We have one more. I used to enjoy it when I could make, okay, somebody says white collar job, then providing free education. Perhaps somebody is into charity work also, maybe an NGO, maybe helping others. Okay, deeply interested in nurturing a new generation of students and imparting knowledge. Great. So there is another, wanted to become settled in life. All right, so we have our various, reasons. Okay, for the welfare of society. So I am getting lot many things here on the Jamboard. Let's move on to the second thing. अच्छा, अब लॉकडाउन हो गया, हमारी आदत थी कि हम लेक्चर देंगे, हम ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे. अब जब इतना कुछ बदल गया, हम एक दूसरे से जुदा हो गए, दूर हो गए, एक स्क्रीन के माध्यम से या खाली आवाज के माध्यम से हम एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं. कईयों के पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, so there was so much of hassle and many of us were new to all of this. Google Classroom नहीं पता, वेबसिस को नहीं पता, जूम नहीं पता, ये सब हमारे लिए बज़वर्ड्स की तरह आने लग गए. हम जल्दी जल्दी अपने दोस्तों से पूछते, अपने कॉलीग से पूछते, इसको शेयर करते, नॉलेज को, कितने गूगल ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स लेते और हमने ये सब शुरू किया. So what are the different pedagogical styles or teaching styles that you have adopted after lockdown? क्या नई चीज आपने सीखी है, क्या नई चीज अपने बच्चों के लिए, अपने एडल्ट लर्नर्स के लिए, अपनी क्लासेस के लिए की है? जस्ट पुट इट हियर. जैसे हमने पहले किया, इस पे आप डालिए अपने स्टिकी नोट्स, अपनी राय, अपनी चीजें. For example, I used lot of movies, infographics and podcasts. I made one podcast also for my students. Okay, let me hear it from you. आप लोगों ने क्या क्या किया, किस तरह से अलग था लॉकडाउन के बाद पढ़ाना और उससे पहले पढ़ाना? तो उसको गैप को आपने ब्रिज कैसे किया? व्हाट न्यू हैड यू डन? आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल. कुछ लोग वॉइस नोट्स भेज रहे थे. किसी ने शायद अपने, सॉरी, I'm not able to write on Jamboard. Okay, you tell me. I'll put your sticky note here. आपने क्या किया है, बोलो. I have learned Wakelet. It's a Wakelet online account where we can put all our collections together. Like if we have to, like we can collect one lecture, not only one lecture for one particular subject, we can collect all the data together on one place only, like all the PDFs, all the PPTs, anything. Can you spell that learning module? WAKELET. Okay. LET. All right. So she has used Wakelet. That's actually a learning management system. Great. Okay, anybody else? Please put your sticky notes. I can see some people here. There are 26 people, 31 viewers actually on this Jamboard, and I just got one answer. Hurry up, people.
कुछ भी आपने किया हो, आपने जूम ही क्यों ना यूज किया हो, गूगल क्लासरूम यूज किया हुआ, प्लीज स्पीक अप, राइट इट. ओके, somebody says Padlet, great. और क्या क्या किया आपने? ऑल राइट, सो किसी ने क्विजेस बनाए क्विजी पे, बेहतरीन. यस, अदर्स प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. If you cannot type, you do not want to type, you can also tell me, I'll type it for you. Okay, somebody's also used a Moodle platform. Wonderful. Ma'am, I made my own YouTube channel, but I cannot write it. I don't know how to write. That's so. All right, I'll help you, sir. So somebody made a YouTube channel. Fantastic. Anybody else? What else have you done? What else have you used? That's it? Or do we have more inputs? All right. So we wind up this activity and we move to the next one. अब आपने देखा होगा कि शुरू से we are in the habit of lecturing, we are in the habit of reading a lot or telling our students to read. फिर बीच में जमाना आया किसी किसी के पास, especially साइंस वालों के पास, ऑडियो विजुअल्स की सपोर्ट थी through schools and colleges, and they could use smart boards, they could show students something, they could demonstrate something in their lab. But you can very much look at this learning pyramid and you can see कि किस तरह से लेक्चर का जो अटेंशन या रिटेंशन रेट है बच्चों का वो सिर्फ 5% है. And when you read to them, or even if they read, that's just 10%. Audio visual is increased to 20, demonstration is increased to 30. Whereas if you have a freewheeling discussion, if you tell them, if you give them prompts, you endorse them, motivate to talk in the class, you initiate something, it increases by 50%. But if they practice by doing, if they know, what are they doing? How do they have to do with their own hands? The learning capacity is 75%. But if you teach to others, that means if you make them the class owners, यानी कि या तो आप flipped classroom आजमाते हैं, ब्लेंडेड स्ट्रक्चर आजमाते हैं, जहां पे टीचर आप ही नहीं है बल्कि आप उनके साथ एक फैसिलिटेटर है, लर्नर है, एंड यू आर हेल्पिंग योर स्टूडेंट्स आल्सो टू टेक ओवर द क्लासेस. Maybe they are being the teacher at that time. Maybe you have used some breakout zones on Zoom classroom or any other system, or you are telling them to work in pairs and help each other for maybe one question, one concept, one theory, one equation. And if they realize what is the immediate use, is that education relevant to them? क्यों पढ़ रहे हैं वो सिलेबस, क्या जरूरत है, is it just the degree, is it just the marks, or something beyond that? Are they able to relate? The learning magnifies to 90%. So this is how our students learn. All right, so basically there are 4 learning styles. You can, or your student can, be an activist, reflector, theorist, or pragmatist. But the various approaches that we are using in form of teaching our pupils are 2 kinds. Remote learning approaches are of 2 kinds. One is synchronous, another is asynchronous. अब सिंक्रोनस क्या है, जो आज हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, यू कैन सी मी, classroom teaching hai, online teaching hai, where we can see each other and we are present live. We can do activities together simultaneously. We are in touch with each other. It's synchronous. If I give you some video, if I give you some quiz, okay, do it at home and I'll check and send it to you. Or I have some voice notes to you, I send it to you through WhatsApp, maybe explaining a concept. I am teaching, but that's asynchronous mode. All right, we'll move to the learning styles. Now, I request you to have paper and pen with you.
I give you 2 minutes. Please hurry up and let me know whether you have a paper or pen or paper or pencil, whatever, anything with you or not. We are going to play tambola now. अब जब लॉकडाउन में गली तंबोला और दिल्ली के अपार्टमेंट्स का तंबोला है तो क्यों ना जीजीडी एसडी भी तंबोला खिलाया आज पेडागोजी की क्लास में. सो हरी अप प्लीज, वी आर गोइंग टू प्ले तंबोला नाउ. I'm waiting for you. I'm waiting for some sign and signal. Somebody unmute and tell me, okay, you have the paper and pen with you. I have the paper Yes, and madam, pen. I also have. Yes, ma'am, Great. even I have So the we paper move. and pen. All right, perfect. ओके अब ये है लर्निंग स्टाइल्स तंबोला. आपको क्या करना है, आपने बॉक्स बना लेने हैं 4 अलग अलग, या बॉक्स नहीं बनाने तो जस्ट 4 लाइंस आप खींच लो एंड राइट दीज नंबर्स इन दीज वेरी सीक्वेंस. So you begin with box number 1, you write 1, 5, 6, 11, 12, 22. Next box you write 2, 3, 8, 10, 13, 24. Next box you write 7, 9, 14, 18, 19, 21. And next you write down 4, 15, 16, 17, 20, 23. Are you through? When you're through, when you have made your boxes, just let me know. Okay, one person has done. How about others? I am still waiting for your call here. I've done. Okay. And ma'am, All Yes, right. done, ma'am. Great. So should we move on? Yes. So it's a yes from the whole house. All right. Yes, अब ma'am. आपने ये अपनी तंबोला चिट I बना have ली done है. 2 circle, madam. Sorry? I have done 2 circle. I missed something. You missed something. You can see the screen and you can write it again. I went back to madam to the link, Jamboard link. That is why. Madam, we are over with Jamboard. We are at somewhere else now. You can check your screen. You can see the PPT. Yes, madam. It was unmute my, and when I unmute my audio, then it was okay, madam. I am now with you. Just note down these numbers on a slip of paper in this very sequence. When you're done, just let me know. And I also request the IQAC team or people who are managing, in case somebody is writing any answer or anything in the chat box, please communicate it to me by unmuting. Because it would be difficult for me to get down to the chat box as I can just see my screen with PPT. All right, are you through now making your tambola slip? Yes. Say, all right, perfect. So we move on. Now, there are going to be no right and no wrong answers for you. What you're going to do, I am going to attach one statement with each number. जो statement आपके दिल के करीब है, आपके रोज के काम के करीब है, आपके स्टाइल के करीब है, that means the statement you are agreeing with, you're going to circle that number and you're going to leave rest of the numbers. Are you ready? Any doubts, anyone? जो नंबर पे जो स्टेटमेंट आएगी, अगर आपको लगता है वो आपके लिए सही है, if you agree to that statement, please mark a circle around that number, leave rest of the numbers. You need not worry कि सबको circle करना है, हमें नहीं करना है. You need not worry कि एक ही बॉक्स भर रहा है, बाकी नहीं भरे. It's okay. And there is nothing wrong and nothing right here. Okay, we move on to the game now. So, point number 1, I enjoy doing new things. So if you enjoy new things, novelty, variety, circle number 1. Number 2, I like to do a job well. If you really absorb into doing job, if you're really attentive towards your things and you really want to do the best, you are some perfectionist kind of a sort, you can circle number 2. Number 3, I think carefully before making up my mind.
अगर आप 1000 बार सोचते हैं ये करूं ये ना करूं, the plus and the minus, the pros and the cons, you measure each and everything, you're very careful. Circle number 3. Number 4, I make decisions quickly. If you're very quick, panic stricken, बस कर दो, अब काम खत्म करना है. So circle number 4. If you make your decisions quickly, circle number 4. Number 5, I enjoy challenge. If you enjoy challenges, you enjoy adventures, you enjoy mysteries, you enjoy certain out of the box things, you are comfortable with things changing around you, then circle number 5. Circle number 6, only if you are an outgoing person, you're very lively, you are extrovert. You like to interact, you like to talk to people, you like to meet and greet with people. You like to share, you like to listen. और बात किए बिना आपका दिन नहीं निकलता. So circle number 6 is for you. Number 7, you will put down a circle only if I don't act straight away. I take time, I think. I don't act at the impulse, or spontaneity is not there in me, then I will encircle number 7. Number 8 says it takes me a while to make up my mind. आप फिर से सोचते हैं, विचार करते हैं. What is to be done? So if you take time to make up your mind, then circle number 8. I like people to take things seriously. अगर आप कहते हैं मैं एक सीरियस इंसान हूं और आसपास वाले लोग भी सीरियस होने चाहिए, उनको हर काम समय पे करना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, जो भी वो काम कर रहे हैं हर वक्त मौज मस्ती नहीं होनी चाहिए. If you're that serious, damn serious, then circle number 9. Number 10 says I listen before I speak. If you are a good listener, you listen patiently and you are active listener also. That means, so you give your feedback, you speak, but before that you listen attentively, then you circle number 10. Eleven says I don't usually hide my feelings. If you are wearing your heart on your sleeve, if you're very open, you don't hide your feelings. You cannot mask yourself, you cannot camouflage, you cannot hide anything. Circle number 11. The number 12 says, I don't like quick people. बहुत तेज तरार, बहुत impulsive लोग, जल्दी से कुछ करने वाले, panic stricken, मुझे पसंद नहीं है. So if you don't like those quick people, or maybe cunning people too, then circle number 12. Are you through this? Yes? Shall we move on? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All Yes, right, ma'am. perfect. We move on to the last set of questions. So number 13 says, I like people who think before they act. मुझे वो लोग खासे पसंद हैं जो पहले सोचते हैं कोई भी काम करने से पहले. So they weigh, पहले तोलो फिर बोलो. So for that, number 13 is there. If you agree to this, you have to circle number 13. Number 14 says, I like things to be done well. चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, वेल रिसर्च्ड होनी चाहिए, हर काम टिच का होना चाहिए, टिप टॉप होना चाहिए. So if you're that kind of a person, you like things to be done really, really well, then you have to circle number 14. And mind you, सब कुछ सर्कल नहीं करना है. जो आपके बहुत करीब हैं चीजें, सिर्फ वही सर्कल करेंगे. You will only circle the numbers and the statements that are really close to you and you are actually doing them. You like them, you practice them in life. If you do not agree, if you do not yourself do that, please do not circle them. Number 15. मैम आपको बताना भी है अगर कोई रो कंप्लीट होती है तो आपको बताना भी है, या हमने आपने अभी मुझे कुछ नहीं बताना, अभी आप करते जाओ till number 24, उसके बाद देखेंगे. So everybody has to be a winner, I believe. So number
Number 15 is I enjoy group work. अगर आप टीम स्पिरिट है आप में, आपको कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज पसंद हैं, लोगों के साथ उठना बैठना मिलना गिलना, उनके साथ काम करना, शेयर करना, हाथ बटाना, उनके साथ मशवरा करना, उनके साथ काम करना पसंद है, इफ यू आर अ ग्रुप वर्कर देन यू विल सर्कल 15. बहुत सारे लोग हैं जो आइसोलेशन में काम करना पसंद करते हैं, अपना अलग एक डायरेक्शन में अकेले बैठकर, they are very scholarly, or perhaps the so-called armchaired intellectuals or research-minded people. They do not like to share, they do not like to be with people, and they're introvert also. They will not circle this. Only people who enjoy group work will circle 15 number. I can upset people. I'm very famous that I upset people very nicely. कोई भी बात कही जाती है, कोई भी हरकत हो जाती है कि दुनिया अपसेट हो जाती है मुझसे. अगर ऐसा है तो 16 नंबर को आप सर्कल करेंगे. I enjoy practical activities. अगर आपको practical activities पसंद हैं, खुद सीखते हैं जब आप जिंदगी में कुछ काम करते हैं, if you like that practical approach, doing yourself in a demonstrative way, having some tangible appeal of things. So if you're into practical activities, you enjoy them, then circle number 17. अब अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट नहीं भी हैं, पर बहुत ही काम और कंपोज्ड इंसान हैं, जो डिस्कशंस में भी पार्ट लेना नहीं चाहता, या काम है, लेड बैक है, लेजी है, आराम से सुनते हैं, चुप कर रहते हैं. So if you're so calm in discussions, you're not taking any lead, you don't plunge, you don't jump into discussion, then you circle number 18. Nineteen says I can get cross with people. अगर आपका वैसे ही मनमुटाव हो जाता है लोगों से, आप भिड़ जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता भिड़ने का, लड़ाई करने का, या आपके पर्सपेक्टिव्स हमेशा क्रॉस रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, भिन्न रहते हैं, तो आप सर्कल करेंगे नंबर 19. नंबर 20 वो लोग सर्कल करेंगे who think that I don't think about other people. उनको जग की कोई परवाह नहीं है. They are very worldly wise. They don't believe in this world or in the social norms and constructs. They don't care about people. They don't think about people. वो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो अगर आप इस धारणा में विश्वास रखते हैं तो आप 20 नंबर को सर्कल करेंगे. You don't think much about people. 21 is to be circled, as it states, I have firm views about what is right and wrong. If you are very, particular about right and wrong, you know what's right, what's wrong. You have your set dictates, you have your set dogmas. आपका already जिंदगी में एक channel बना हुआ है कि यही सही है, यही गलत है. You are very firm about that. Maybe, you have a kind of judgmental or a fundamentalistic kind of attitude also. So you circle number 21. 22 says, I do things without thinking. आप सोचते नहीं है, बस कर देते हैं. So you do things without thinking, you will circle 22. 23 says, I speak my mind. जो मन में आता है, जो दिमाग में आता है, आप सीधा बोलते हैं, बिना सोचे. So whatever comes to your mind, you are quick to revert. You are quick to say. So you speak your mind. Circle 23 if you agree to this. And if you are one of those. The last number is 24. I like to work carefully. आप अपना काम बहुत carefully अगर करते हैं, बहुत particular हैं, फिर आप 24 को circle करेंगे. Are you through now? चले आगे? Yes, ma'am. अब आप देखो आपका सबसे ज्यादा स्कोर कहां पे है. जिस बॉक्स के नीचे आपका सबसे ज्यादा स्कोर, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्कोर ये देखना है, सबसे ज्यादा सर्कल जिस बॉक्स के नीचे उसको टिक मार्क कर दो.
हो सकता है कुछ लोगों के 2 बॉक्स का सेम सर्कल का अमाउंट, यू आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट प्लीज, 13 + 20 + 24 नहीं करना, आपने सिर्फ गिनने हैं जिस बॉक्स में आपके मैक्सिमम सर्कल लगे हैं नंबरों को. फॉर एग्जाम्पल यू कैन काउंट, लुक एट दिस, 1 2 3 4 5 6 नंबरों में से इनमें अगर मेरे 6 सर्कल हैं, सो ऑब्वियसली इसके नीचे मैं टिक मार्क लगाऊंगी. और अगर मान लो यहाँ पे 5 हैं, इस सेकंड वाले बॉक्स में सिर्फ 2 सर्कल हुए हैं, यहाँ पे 6 हो गए, दैट मीन्स जहां मैक्सिमम है वहां पे टिक मार्क करूंगी. एंड मे बी माय फर्स्ट एंड थर्ड बॉक्स हैव maximum circles with 6 and 6 or maybe 5 and 5 or 4 and 4 और बाकी जगह सिर्फ 2 या 3 है, तो मैं दोनों बॉक्सेस के नीचे टिक मार्क करूंगी. Are you through it now? हो गया आपका? Yes, ma'am. All right, अब देखते हैं कि आपने काम क्या किया है, कहाँ पहुंचे हैं. So this activity is about your learning style. आप खुद अगर आज मेरे स्टूडेंट हैं तो आप किस तरह के स्टूडेंट हैं. So here goes your learning score sheet. अगर आपके पहले में ज्यादा सर्कल्स थे तो मानिए आप एक्टिविस्ट काइंड के इंसान हैं. अगर दूसरे में आपके सर्कल ज्यादा हैं तो आप रिफ्लेक्ट करते हैं, चीजों को सोचते हैं पहले, फिर कुछ करते हैं. अगर आपके तीसरे में स्कोर ज्यादा हैं तो आप एक थियरिस्ट हैं. और अगर चौथे में हैं तो आप प्रैग्मेटिस्ट हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं. अब मुझे ये बताएं कि आर योर scores okay? Are you this kind of a learner or this kind of a person? Do you agree or you disagree? Ma'am, totally agree with you, ma'am. I got 2 ticks. Actually, I got. That's similar okay. tick. आपके Yeah, किस I में got आए हैं ticks? second and fourth rows. That Columns. means you are reflector and pragmatist, right? आपको प्रैक्टिकल चीजें भी करनी आती है, पर वो प्रैक्टिकल चीजें क्यों करनी है, उससे क्या बेनिफिट है, उसमें क्या प्रोसेसेस या फिनोमेना इन्वॉल्व हैं, आप शायद चीजें इस तरह से करती हैं. Am I right? Yes, ma'am, I agree. Okay, perfect. Anybody else who would like to share their scores? Ma'am, I also got a same number in second and third. एक बार आप पहले अपना नाम लेंगे, फिर आप बोलेंगे क्या, और अगर आपको लग रहा है कि साथ में कोई और बोल रहा है तो प्लीज एक इंसान चुप कर जाएगा उस वक्त. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू. Myself, Dr. Rama Gandotra. जी जी रमा Ma'am, जी. I have got same score in second and fourth. All right, perfect. So you agree. How do you learn? You tell me now. What do you do in life or how do you learn? I think the score is perfect for me. Okay, score perfect है. आपकी जीवन शैली I do work in this. I do work in this manner. All right, great. Anybody else? किसी का एक्टिविस्ट आया है क्लास में? I have got it. Myself. I have got. सर आपका नाम? I'm Dr. Narendra Singh. I have got same score in 3. That is first, second, and fourth. I have got. Okay, so you are activist, reflector, and pragmatist. Yes. Wonderful. जी कोई और भी बोल रहा था अभी? Please unmute yourself. Myself is Dr. Ranju. I have scored same score in second and fourth row. All right, तो आप भी रिफ्लेक्टर और प्रैग्मेटिस्ट हैं. ओके, अब हम शुरू करते हैं. हमारी क्लास में एक एक्टिविस्ट भी है. सर आपने बोला जैसे आपका आया है एक्टिविस्ट में स्कोर, फिर रिफ्लेक्टर और प्रैग्मेटिस्ट में आया है, पर पहले हम एक्टिविस्ट की बात करते हैं. आपको क्या लगता है क्या एक्टिविज्म है आपकी जीवन शैली में, या आप जैसे चीजें सीखते हैं या करते हैं उसमें क्या एक्टिविज्म है? Actually, मैम एक्चुअली मैं सुबह उठने से लेके रात को सोने तक थ्रू आउट मतलब कुछ ना कुछ करता रहता हूँ मैम. चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो कॉलेज में जाके कोई काम करना है, तो आई एम थ्रू आउट एक्टिव. तो कभी 5 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि मैं फ्री बैठ. क्या आपको लगता है कि बीइंग एक्टिव इज ओनली एक्टिविस्ट, या कुछ और किसी और तरह का एक्टिविज्म भी है आपके अंदर? हो सकता है एनवायरनमेंट के कॉज को लेकर हो
हो सकता हाँ है जी मैम। टीचर्स के राइट्स को लेकर हो, मे हाँ बी जी आप मैम। किसी पॉलिटिकल संस्था के मेंबर भी हो, किसी हाँ जी पोजीशन पे मैम, भी हो। जैसे आई बिलोंग टू अ विलेज, तो विलेज में ओके, जैसे हमने सोसाइटी बनाई हुई है, तो विलेज में कोई भी काम करना है, कोई लाइट्स लगानी है, कोई रोड का, तो उन अब चीजों में भी रोल प्ले करते वंडरफुल वंडरफुल। नाउ पीपल यू कैन सी, ये सर आपका शुभ नाम? हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने जैसे हमें बताया कि वो एक विलेज में है, सो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है, कोई लाइट्स का इशू है, किसी और की मदद का इशू है, सो ही इज वेरी मच एक्टिव एंड अदरवाइज आल्सो ही इज इनटू लॉट ऑफ एक्टिविटी थ्रू आउट द डे, कि ये बैठते नहीं है टिक के। पर क्या यही है? लेट अस सी हाउ इज ही लर्निंग एंड if our students are activists, then what are they learning, how are they learning, how are we going to create a classroom module, how are we going to teach them कि इस तरह के बच्चे सीख पाए। Now let me tell you, ये जो एक्टिविस्ट, रिफ्लेक्टर, थ्योरिस्ट, प्रैग्मेटिक है, ये चारों तरीके के बच्चे आपकी क्लास में हैं। और कुछ बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, वो 2 या 3 का ब्लेंडेड फॉर्म भी है। दैट मीन्स व्हेन आई हैव टू टीच, आई हैव टू लुक इनटू द एक्टिविज्म आल्सो, I have to reflect also to help them reflect. I have to give a theoretical base also. I have to look, is it relevant to their current life? Is it important for them? Are they going to practice it? So all these things have to be thought about before I think कि आज मुझे कैसे क्लासरूम लीड करना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। So that's why, even if you do not have score of your individual students, but you know कि इस तरह के बच्चे हैं, अगर मुझे मालूम है और वो blend है, that means I have to facilitate all 4 classes. I will not only look at the theorist कि मुझे तो theory पढ़ानी है, मैं theory पढ़ाकर चली जाऊंगी. That is not the way that I am catering to all the students. And moreover, this test is actually honey and mumford test, और इस टेस्ट से हमें लर्निंग स्टाइल भी पता चलते हैं, अपने लर्निंग स्टाइल, हमारी खुद का क्या इंटरेस्ट है, कैसे हम चीजें सीखते हैं, जिंदगी में अनुभव करते हैं और काम करते हैं। दिस ऑल्सो टेल्स अबाउट योर रिसर्च ओरिएंटेशन। Now people, when you have to make hypothesis, I'll just give you one tip. Now you already know you have a score sheet in front of you. हम में से बहुत सारे लोग रिसर्च पेपर्स लिखते हैं और हमें समझ नहीं आता उसका हाइपोथेसिस कैसे लिखें, या मेरी ओरिएंटेशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट कैसे है। जो एक्टिविस्ट है वो एक्टिविस्ट टाइप के टॉपिक ले, क्योंकि उसका वो इंटरेस्ट एरिया है। जो रिफ्लेक्टर है वो रिफ्लेक्टिव टेंडेंसी का है, तो वो अपनी रिफ्लेक्शन दे जब भी वो रिसर्च आर्टिकल लिख रहा है। जो थियोरिस्ट है can actually talk about any theory and the transition in theory. जो pragmatist है वो ये देखता है कि कैसे चीजें जो practical हैं उसको की जा सकती हैं। So any kind of practical lab work, demonstrative activity or quantitative analysis is for the people who are pragmatists. Okay, let's learn more about who is activist, what do they do, how do they learn. अब एक्टिविस्ट वो लोग हैं who learn by doing, वो अपने हाथ से काम करेंगे तब वो सीखेंगे। They enjoy the present tense. They are very much open to the new experience, variety and novelty, and they're open minded. अब इन लोगों के लिए हम एक्टिविटीज कैसे बना सकते हैं? So they are, जब भी बच्चे आपकी क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, so you're going to see that maximum people who take lead, who are actually going to be the first, yes ma'am, yes sir, तो जिन्होंने पहले काम कर लिया होता है, पजल सॉल्व कर रही होती है, क्विज कर लिया होता है, जो रोल प्ले करते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी सबसे पहली स्टेटमेंट रिमार्क उनका आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आगे होते हैं, ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज्यादा बोलते हैं, दे आर द पीपल हु आर एक्टिविस्ट्स. You can very much see within your classrooms.
सो एक्टिविटीज जो हमें इन्वॉल्व करना है बच्चों को, वो रोल प्लेइंग के माध्यम से, पजल, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब जो हमने जैम बोर्ड की एक्टिविटी की थी, दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू not only ice breaking, that was not only your entry ticket to the class, but it was brainstorming activity. All right. Now, whenever we need to frame questions, formative assessment हो, summative हो, या किसी भी तरह की assessment हो, किसी तरह का exam हो, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम किस तरह के सवाल बच्चों को पूछ रहे हैं। अगर हम उनको बोल रहे हैं imagine, transform, suppose you are this and think like this, then what is your take? How can you change this to this? Invent this, rearrange this jigsaw puzzle, design this, compose this, compose maybe, compose some music, suggest a title or caption for this photograph, hypothesize, create. You have to look in the action verbs. Now, these action verbs are very important when you are going to frame questions for assessment and otherwise also, जहां पे आपको activity involve करनी है या फिर आपको बच्चों का देखना है activist temperament कहाँ आता है, कितना वो सोच सकते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट कर कर कितना वो इस तरह के सवालों के जवाब दे सकते हैं। If I talk to you about other activities that you can put into your class, maybe you can sing a song, maybe you can, tell them to sing a song. It can be storytelling, not from your end, but your students' end. Maybe, मैं कोई चीज पढ़ा रही हूँ, मे भी मैं जेंडर पढ़ा रही हूँ, या कोई मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ा रही हूँ और उसमें कोई मैथमेटिशियन की बात है, सो आई कैन टेल ओके रीड हिज और हर स्टोरी, और क्लास में आकर कल बताना कि उसकी लाइफ कैसी थी, उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में कैसे आया, क्या किया। So, you can also tell your students to view certain episodes on TV, listen to certain radio sessions, blogs, or podcasts. And they can also make their own podcast. They can make their own blog. वो blog लिख सकते हैं उस particular topic पे. And you can also give them marks. It is not mandatory thing कि उनको university वाला question paper देंगे और वही वो करेंगे। और अगर वो देना भी है, वो फाइनल्स में आएगा या एमएसटी में आएगा, पर बीच बीच में हम क्लासेस में क्या इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स। Maybe, why don't you tell your students, okay, make a short PPT, just 5 slides, just 3 slides on this topic, whatever you have understood. Or maybe before starting that topic, inculcate this sense of collaboration within them. Ask them to do, they will happily do it. सारी क्लास नहीं करती, 2-3 तो करते हैं, वही बहुत बढ़िया है। You can also use animation, cartoons with them. You can introduce them to ebooks. You can send them PDFs. You can send them docs to read. You can also introduce certain games, infographics. इन्फोग्राफिक्स होते हैं, कुछ कार्टून्स बने होते हैं या सिंबल्स बने होते हैं, और एक एक लाइन में पूरा उसका कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क या प्लॉट डिस्कस होता है जो भी आपने पढ़ाना है। For example, people who are from literature field like me, they can see Course Hero website and they can see there are a lot many infographics there. You can also construct your own infographics. How can you do that? I'll get back to you on that later. So infographics also consist of flow charts. कोई साइंस में फ्लो चार्ट बनाना है, मैथ्स की इक्वेशन का बनाना है, तो आप इन्फोग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज एनिमेशन, वीडियो मेकिंग एंड एडिटिंग। कितना कुछ फोन से आजकल आपका रिकॉर्ड हो जाता है। आप बच्चों को बोल सकते हो कि आप एनवायरनमेंट में पढ़ा रहे हो कि ठीक है, उन्होंने अपने घर के आसपास क्या देखा या क्या किया, उसकी वीडियो बनाए रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, or maybe they are teaching something about environment. Make a video of that and send it to you, or post it on any learning module, maybe Google Classroom or your Blackboard, or like Wakelet, whatever you're using. Tell them to post there so that other students also see that, and they not only learn, they collaborate, they also are they also get encouraged and motivated to follow them suit, to do something more.
Okay, now we move on to reflectors. Now reflectors are people who observe and think. वो देखेंगे ये क्या है, सोचेंगे ये कैसे बना, ये कैसे हुआ, पर हो सकता है वो आपकी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें. So they are going to experience and apply their perspective at various measures but differently. It's not there कि वो आपके सामने क्लासरूम में हमेशा हाजिर हो, आपको दिखें, आपकी गुड बुक्स में हो, क्योंकि जनरली टीचर्स की गुड बुक्स में वो बच्चे होते हैं तो जो ज्यादा अपना काम दिखाते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं या आगे आते हैं. Now for these students, you can conduct certain paired discussions. उनके दो दो के रूम्स बना लो, पांच पांच के बना लो. टेल देम टू टॉक टू ईच अदर. देन एक को ग्रुप लीडर बनाया जा सकता है, या आप ग्रुप लीडर चूज कर सकते हैं, उसको जो ज्यादा नहीं बोलता, और उसको पूछ सकते हैं कि सबने क्लास में क्या बोला. यू जस्ट हैव टू सम दैट इन 5 sentences only. You can give them a questionnaire, maybe something to self-analyze. Like I gave you this game, this particular test for your own self-analysis. क्या आप ये हैं? आप क्या चीज बेहतर कर सकते हैं? क्या सीख सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं? There are lot many personality questionnaires also, जैसे कि multiple intelligence का टेस्ट है, वाक क्वेश्चनरी है, वाक टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं ऑनलाइन, आपको फ्री मिल जाएंगे. एंड यू कैन इंट्रोड्यूस योर स्टूडेंट्स टू दैट. लेट देम सॉल्व ऑनलाइन. क्लासरूम में आप लिंक दो, उनको बोलो बेटा ये सॉल्व करो, या उनको आप कोई विजुअल एक्टिविटी दें, एंड कम आउट विद देयर पर्सनालिटी. लेट देम नो हु दे आर, हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर learning things. Then give them some time out also, just to chat, just to relax, just to think out of the box. Observe them doing activities. Tell them to observe various things. Now I also tell you, जो मैंने पहले से शुरू किया, जो किया, just reflect on that. Think, what was I doing? If I'm your teacher, I am teaching you pedagogy, and maybe if you have to learn pedagogy, what are you observing? Was there a process? Was there a construct? Was there a thought behind what I did? Why did I choose this PPT only, this style only? What was I up to? You can reflect on that, especially people who are reflectors in my class. So you can also help them take feedback from others. वो कुछ करते हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनके ऊपर प्लस पॉइंट भी बोलते हैं या उनको पॉइंट इम्प्रूवमेंट का देते हैं. डोंट से ओके यू वर बैड इन दिस, बट टेल देम दिस कुड बी डन दिस वे. Ask the students ये चीज बेहतर कैसे हो सकती थी, इसमें कौन सा पॉइंट लैकिंग है. Then also tell them to be with each other, make their pairs and make them learn with each other, talk to each other. They can also conduct interviews, they can also learn, they can interview anyone, interview their own father. Now for example, अब अगेन मैं लिटरेचर का एग्जाम्पल दूंगी. हमारे को एक सवाल आता है, बहुत अंग्रेजी वालों को पता होगा, बच्चों को सवाल आता है जनरल इंग्लिश में, टेल योर फादर, राइट अ लेटर टू योर फादर दैट यू वांट टू स्टडी मोर एंड यू डू नॉट वांट टू गेट मैरिड. आता है ऐसा सवाल. अब बहुत सारे बच्चे ये कोई सुपर एडवांस गाइड से देखकर लिख देते हैं, बट आई ऑलवेज टेल देम, know what is marriage, know what is education, what is the plus of education, what's the plus of marriage, what's the marriageable age. Know your family finances, know about your family culture. Ask your father, is education important, till what level, what am I supposed to do, or should I get married, and why does he want to get married at that age. Then write that letter. बिकॉज जब आप इंटरव्यू करेंगे, आप किसी चीज को अनुभव करेंगे, तो आप एक बेहतरीन चिट्ठी लिख सकते हैं, रादर जो आप क्रैम करके किसी की देख कर इंटरनेट से उठा कर करते हैं. Make simple form short sentences, but at least you are reflecting, you know what you are writing, and that will give the evidence of your truth through that letter. और वहीं पे फर्क आता है असेसमेंट का और लर्निंग का. Knowledge is not learning. Learning is something else. आपके पास knowledge हो सकती है, डिग्रियां हो सकती है, but it's not necessary you've learned anything in life. Okay, let us move to certain other action verbs and of reflectors and activities. Reflectors
अगर हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, जो मैंने पढ़ाया है उसके इर्द गिर्द मुझे सवाल क्रिएट करने हैं, मैं हमेशा सवाल क्रिएट करूंगी जो आपके एक्शन वर्ब्स हैं. फर्स्ट आपको जो येलो में दिख रहा है, सो आई विल टेल माय स्टूडेंट्स टू एनालाइज, infer, classify, maybe compare और contrast, differentiate. अगर वो रिफ्लेक्टर्स हैं उनको मालूम चलेगा कि दो चीजों में क्या भिन्नता है, क्या अलग है दो चीजों में या तीन चीजों में. So they'll be able to classify. If they are into process and phenomena, they can also deconstruct. They can examine, they can also survey. That means if they can use a questionnaire, if they can go out and ask people, or they can document something, so they can interview, they can also survey and hence demonstrate something. From that they can also deduce, they can determine, they can also maybe simulate something, they can copy something, and they can also mix certain knowledge, certain frameworks that are available in their reading. They can mix and match, they can make a potpourri of their reflection by using the various thought processes, the various discourses that are available in their readings, whatever their teacher are telling, whatever is there online, whatever PDFs they have received. So what are the activities of these reflectors? So we can report, they can survey, they can chart out something, they can also use Excel sheet or spreadsheet, they can use certain flow charts, they can make infographic, they can also make some spider diagram. You know, if I say, okay, आप environment को कैसे protect करेंगे? Make a spider diagram. तो आप उसमें brainstorm करेंगे, environment protection बीच में लिख के उसकी अलग अलग टांगे निकाल देंगे और उसमें अलग अलग points लिखेंगे. So that's how you brainstorm and you make a spider diagram. Or maybe you can ask them, you know, इस बार एक IIT I don't know, IIT Goa I believe का एक क्वेश्चन पेपर था जिसमें बच्चों को कहा गया था इस चैप्टर से कौन से सवाल बनाए जा सके. That means they had to reflect. They had to use action verbs in order to construct questions. The first question was of 30 marks. Enlist questions from this chapter, whatever you have understood. You will not use the questions at the back of the text in your book. You will not copy from each other. You will not copy from net, because you're going to get marks if you are going to give your own reflection in form of the construction of questions. दूसरा सवाल उनको आया था कि जो आपने ऊपर क्वेश्चंस लिस्ट किए हैं 5, आप उसी में से एक सवाल का जवाब खुद करेंगे, खुद लिखेंगे. That was of 20 marks, so total 50 marks. So this was the kind of activity, and you cannot think, you've actually given the whole rights, the ownership to your students only, कि आप पहले इसमें से questions लिखें. So from their ability to construct questions, you can know how good is their reflection. What have they understood actually? Now, understood is not the real term. Understood हम नहीं देख सकते. हम बहुत बार बोलते हैं, have you understood? I understood this. I can understand this. Understood, understand एक बहुत abstract concept है. मेरी understanding आप लोगों की understanding से बहुत अलग हो सकती है. Hence, we should avoid these abstract terminology. The action verbs that I am telling you to use, they're very concrete. जिससे दिखता है, जिससे पता चलता है और encount होता है कि क्या सीखा, क्या हुआ, कहाँ से सोचा जा रहा है, बच्चा कैसे देख रहा है, क्या हो रहा है. So you can also ask them to summarize something. Maybe you can ask them to make a collage. You can ask them to make a mishmash of some media. You can ask them to, rehash some papers and make their paper, or listen to 2-3 songs and create their own beat out of it. So it's up to you what kind of activities you want to frame in your classroom session. Now we come to the theorist. अब जो थियोरिस्ट हैं वो बहुत थियोरेटिकल होते हैं अपनी अप्रोच में. उनको मॉडल, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फैक्ट यही समझ आता है. दैट मीन्स अ वेरी लॉजिकल. इन लोगों के लिए आप मॉडल दिखाओ, इनको कुछ स्टैट्स दिखाओ, फिगर्स दो. You can also share some anecdotes or stories so that they can relate to it, they can understand that. You can also provide some background information.
and you have to tell them how to apply the theories. इस तरह से वो क्लास में और बेहतर तरीके से सीखेंगे। एक और है फ्रेयर का मॉडल है, वो जनरली कॉन्सेप्ट और थ्योरी वाले, फॉर एग्जांपल साइंस वाले हैं, अंग्रेजी वाले, लिटरेचर वाले भी यूज करते हैं, मैथ्स वाले भी यूज करते हैं। सो व्हाट डू दे डू, दे डिवाइड द पेज इनटू 4। एक तरफ वो लिखते हैं डेफिनेशन, दूसरे बॉक्स में लिखते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरे बॉक्स में वो लिखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और प्लॉट और थीम और सर्टेन फैक्ट, और चौथे में वो लिखते हैं एग्जाम्पल्स जो वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सोनेट समझाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं बीच में लिखूंगी सोनेट, 4 हिस्सों में, टुकड़ों में डिवाइड करूंगी। एक में लिखूंगी सोनेट इज अ पोम ऑफ 14 लाइन्स, यानी कि 14 लाइन की जो पोम है वो सोनेट हुई, वो उसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। सोनेट के कितने प्रकार हैं, पेट्रार्कन है, शेक्सपियरियन है, कोई और सोनेट है, वो मैंने लिख दिए। उसकी कोई राइमिंग स्कीम है, वो मैंने दूसरे उसमें डब्बे में लिख दी। तीसरे में मैं लिख रही हूं एग्जाम्पल, शेक्सपियर के सोनेट हैं, व्याट एंड सरे के सोनेट हैं। चौथे में मैं लिख रही हूँ मे बी रॉबर्ट ब्राउनिंग का या किसी या दांते की एपिक पोएम, कि वो सोनेट नहीं है, वो 14 लाइन से भी आगे चले जाते हैं और उसमें वो सोनेट वाली बात नहीं है। So this is how, through Freir's model, you can explain things. You can also help your students build the vocabulary. You can help them, learn the formative concepts or facts and figures or, related to your subject. एक और तरीका है first steps आप जिसको कहते हैं, उसमें ये जैसे मैथमेटिक्स वाले होते हैं, उनकी डेरिवेशंस हैं, इक्वेशंस हैं। सो फर्स्ट स्टेप्स अप में है कि जितनी आपकी इक्वेशंस हैं, आपने उसका सिर्फ फर्स्ट स्टेप उनको लिखने को बोलना है। उनको सिर्फ ये पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेप इसका 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 ये है, एंड व्हेनेवर दे रिव्यू इट अगेन दे वुड नो कि फर्स्ट स्टेप इतना ही है और ये फर्स्ट स्टेप इस फर्स्ट स्टेप से अलग है। सो दीज आर सर्टेन, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, आप एजुकेशन वालों से बात करेंगे, देयर आर umpteen models of pedagogy. There are more than 200 ways you can teach your students. So this is some, this is I am using Bloom's taxonomy here, and उसके इर्द गिर्द मैंने अप्लाई किया है एक्टिविटीज को, किस तरह इस तरह के बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जा सकता है, या हम ये चीजें यूज कर सकते हैं ब्लेंडेड फॉर्म में। अब आगे चलते हैं, ये जो थियोरिस्ट होते हैं इनके लिए किस तरह के सवाल, या जब आपको थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने होते हैं तो आप किस तरह से बना सकते हैं। सो यू हैव टू यूज द वर्ड्स लाइक इवैल्यूएट, रैंक, नेटवर्क, कंक्लूड, जज, देन पोस्ट, then debate about this, support your answer, give certain supporting discussion, discuss in the light of this sentence, then decide or select. Maybe you can ask them to prioritize or give their opinion. If this was him or this was her, if this was the connection, do you give your opinion? What would have happened? Or maybe you can tell them कि give your own suitable ending to a story. आपको क्या लगता कि ये story कैसे end होती? So here you are bringing the theoretical level of your students. So you can ask them to criticize, you can ask them to judge. Opinions उनके मांगो। जब मैंने आपको बोला अच्छा आपके reaction क्या है, thumbs up, thumbs down. So that was one activity around this. Then when I tell you, okay, volunteer, unmute yourself. So I am bringing your opinions from the various threads of what you say we can discuss. You can include mock court trial, you can use reporting, you can tell them to report certain event, maybe in writing, maybe in oral narrative within the classroom time. You can give them, the show and tell activity, a new item is to be described. Tell them to create some hypothesis, survey, give some recommendation, give a summary, give evaluation. So this is all the people or students, who are good in theory, or in case you're teaching theory, you can use these very activities. I hope it's very much clear to you and you are learning, or you are sleeping now. Let's have your take. We are very much active
and very much listening to you, ma'am. Just one person is listening, I guess. I cannot hear others. No, Jasmine ma'am, We are even I all am listening. listening. Good afternoon, ma'am. ये टीचर का डंडा कि सबको बोलना पड़ रहा है, listening, हाँ ma'am, listening. बोलो बोलो बोलो, सुन Yes, रहे हो कि ma'am. नहीं सुन रहे हो? Yes, ma'am, All we are right. listening. Okay, we'll move on to We are the next definitely one. not sleeping because we are all answering. All right, definitely. Thank you very much. I'm obliged. So let's move on to the pragmatists. अब जो बच्चे practically काम करना चाहते हैं, that means they want to put their learning into practice. जो मैंने पढ़ा है classroom में, जो मेरे teacher सिखा रहे हैं, वो मेरे किस काम का है? So they'll come with that question in their mind. They want to see problems and they want to find opportunities and challenges. How to solve it? उनको एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस, ये सब एथिक्स ये समझ नहीं आता, उनको गेम्स माइंड गेम्स समझ नहीं आती हैं, उनको एकदम तर्क चाहिए होता है जिंदगी में। ये क्यों हो रहा है? कोविड हो रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? इतना स्क्रीन टाइम है, मैं क्या कर सकता हूँ? या मेरी टीचर मेरे से दूर है एंड ऑनलाइन एग्जाम्स हैं एंड स्टूडेंट्स आर फीलिंग मुझसे याद नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा बिकॉज आई एम नॉट इन दैट क्लासरूम सेटअप। वो बहुत दुखी हृदय होते हैं, उनके लिए क्या करो? So give them some time to think and also ask them what do they want, what is lacking, and what is their idea of learning, what do they want. Ask them for certain applications. Learn in reality, always correlate with whatever is happening. Now you would have seen, I introduced one of my friends to you just now in the beginning. उसका क्या था? It's not necessary कि आपने छोटे बच्चों को पढ़ाना है स्कूल के तभी आप कुछ ड्रामा कर सकते हो. Teaching is all about, pedagogy is all about performance. First comes your knowledge. Are you prepared? Then comes how are you constructing your class, the various activities. And are you attaching those very learnings or those very modules to the real life? भले मैंने कोर्स नहीं डिजाइन किया, यूनिवर्सिटी ने किया है, पर उसमें से कहाँ मैं कुछ निकाल सकती हूँ कि मे बी कोई मेरा बच्चा विलेज में है, उसको मैं अटैच कर लूँ उसके साथ, कोई बच्चा मेरी अर्बन सेटिंग में है, कोई मिडिल क्लास है, कोई एलीट क्लास है. हाउ कैन आई इन्वॉल्व देम? So you have to use certain case studies. You have to do problem solving, discussion within your classroom meters. When I have to make certain questions, then the way I am going to work on the action verbs. So I will use apply, maybe edit some information, maybe implement this in your life, maybe share, then simulate, upload, teach something, draw. When we were, I also take master's class, तो मैं अपने बच्चों को हमेशा presentation के लिए क्या देती हूँ, कुछ ना कुछ पार्ट उनको दे दूंगी कि अब ये आपने अपनी क्लास में पढ़ाना है और मैंने आपका स्टूडेंट की तरह सामने बैठना है. So this is a kind of mock teaching for them. Maybe they have to be teachers ahead, even if they are not to be teachers. Still, let them express, let them execute their understanding. उनको क्या समझ आता है, वो कैसे लर्न करते हैं, उनके क्या विचार हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे किसी और को समझाते हैं. Let them play in the classroom setting. Give them some chance. अब इसमें जैसे again interview आ गया, then construct or record something, and you can tell your students maybe to edit something. Maybe you make a PPT, tell them to edit it. Give them role playing within the classroom. Tell them to make a movie on some topic maybe. Tell them to demonstrate or present something. Again, interviewing has come. Tell them to make a mental map or actual map, or maybe map some transition in the use of some chemicals. कुछ catalytic reaction हुआ है, वो कैसे change हुआ है, तब्दील हुआ है, उसका वो एक flowchart बनाए, उसका map बनाए. Use certain games that use simulations. Tell them to collect something, maybe collect stamps. Now, एक activity मैंने जो की थी, I take world literature class. तो जब शुरू हुआ, पहला दिन था, तो उनको syllabus तो मैंने भेज दिया Google Classroom पे. उनको एक मैंने पिक्चर दी. उस पिक्चर में अब मैं एक लड़कियों के कॉलेज में हूँ, so all my students are girl students. So I gave them a picture in which a girl was sitting and there were files and books all around. There was globe.
There was also a time machine. Then there was a sip shale, and there were planets all around over her head, and huge large library. I just asked them, I said, if you are this particular girl, you are this woman, what do you what do you want to acquire out of this class of world literature? What do you think world literature is? What do you want to do? What is the benefit, and how are you feeling if this is your environment? So that was brainstorming, and I got to know वो कैसे सीखना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी आशा उनकी उम्मीद क्या है सब्जेक्ट से। फिर उसके बाद उनको कहा कि आपने बचपन से लेकर अब तक बहुत लिटरेचर पढ़ी है, तो आप भले फॉरेन नहीं गए तो चलो हम इस क्लास के जरिए ही फॉरेन घूमते हैं। अब फॉरेन कैसे घूमेंगे? जो जो टेक्स्ट पढ़ाऊंगी वो किसी ना किसी देश का तो होगा, क्योंकि वो ट्रांसलेटेड है। कभी हम रशिया जाते हैं, कभी हम न्यूजीलैंड जाते हैं, कभी हम इटली घूमते हैं। तो उस घूमने से पहले मैंने उनको बोला मेक योर पासपोर्ट। अब पासपोर्ट में क्या है? पासपोर्ट में मैंने कहा आपकी स्टैंपिंग होनी बहुत जरूरी है, यानी कि मेरी क्लास में आने से पहले आप कितने देश विदेश घूमे हो। अगर मान लो आपने इंडियन लिटरेचर के कुछ टेक्स्ट पढ़े हैं, एक स्टैंप बनाओ, उस स्टैंप में अपना जो बुक कवर है उस इंडियन टेक्स्ट का वो लगाओ, एंड राइट द सिटी रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथर, द ऑथर्स नेम, द बुक्स नेम एंड द रीजन ऑफ द सिटी। अगर मान लो आपने कोई शेक्सपियर या कोई ब्रिटिश टेक्स्ट पढ़ा है, कोई अमेरिकन टेक्स्ट पढ़ा है, आप उसकी पिक्चर लगाओ, आप वहां का एरिया या वहां का कंट्री का नाम लिखो। सो दैट वाज अनदर एक्टिविटी टू इनिशिएट देम इनटू some practical output, that how they're going to learn world cultures in the class. They're going to assimilate world values of acceptance and tolerance through the curriculum and syllabi set for them by the Punjab University. So you can ask them to take photographs, make their diary, they can scrapbook, they can make a collage, you can use Jamboards like we did today. There are other ways and means also. They can make diagrams or puzzles, and they can also make sculptures. People who are into, some visual performing arts, mixed media, painting, so they can do that. अब बात आती है जो हम अक्सर करते हैं। अक्सर क्या करते हैं? हम हमेशा बोलते हैं तुमने याद किया, तुम्हें क्या रिकॉल हुआ, what have you understood, have you remembered, do you remember this? So this is, अब इसके लिए हम क्या करते हैं? They recognize, they describe, they compare, they find, and mostly हमारे जो क्लासरूम सेटअप्स हैं हम हमेशा उनको बोलते हैं क्रैम करो, रिवाइज करो। कल मैंने क्या पढ़ाया था? अब आप देखो, आपका सुबह एक how do you start your FDP? Tell me. I know it, but I want to listen it from you. Any refresher, any orientation, any FDP, सुबह क्या होता है? पहली चीज क्या होती है? I cannot hear anyone. Reviewing. We Okay, express the reviews. Yeah. Very good. Reviewing. अब reviewing क्या है? ये word review क्यों आता है? क्या जरूरत है? One, review means you're recalling कि कल क्या हुआ. So it's actually a revision exercise for the whole of the class and for you yourself. Two, review. You are critically reviewing उस टीचर ने क्या किया, उस सब्जेक्ट में क्या हुआ, मुझे क्या समझ आई, क्या क्लास में कोई डिसेंट थी, कोई सवाल थे, किसी ने और एलैबोरेशन मांगी, इंटरेस्ट था, क्या था, किस काम आया, एंड यू रिफ्लेक्ट। मुझे इससे क्या मिला है, व्हाट्स द बेनिफिट, मेरे में क्या चेंज है इसके बाद। So this is the process of review. That's why reviews are very important. So whenever we tell our students to remember or understand, how can they do? Either they can use highlighters, tell them to make certain notes, use different color highlighters. कुछ लोग अलग अलग colors देख के बहुत अच्छा याद करते हैं या उनकी समझ शक्ति develop होती है. Tell them to bookmark. They can also bookmark certain pages on websites also. Mind mapping, the spider diagrams, or make notes and bullet points. They can make their own blog, they can journal, they can comment. Google Classroom में टीचर कुछ लिखती है या बच्चों को बोलो ओके आज जो भी हमने पढ़ा, जो भी तुम्हें लगा, जो भी सीखा, just comment. Have a classroom thread. Let them put something there. Let them remark, good or bad, whatever.
Let your classroom stream be overflowed by their thoughts. Tell them to subscribe certain portals. ये लोग Instagram पे हैं, Pinterest पे हैं, Facebook पे हैं, फिर बहुत सारी और भी forums होते हैं, Reddit है, उसके अलावा और 100 forums हैं, social networking है, जहाँ पे they can subscribe to certain close groups. वो मैथमेटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, लिटरेचर कर रहे हैं, वो डायग्राम्स कर रहे हैं, विजुअल आर्ट कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग कर रहे हैं. टेल देम टू सब्सक्राइब so that वहां पे जो जो लीड्स आती हैं, they know what's happening in the world. They are also contributing, or at least they're learning from that. And you people can also subscribe, so that there's a collaboration and we learn from various people, their pedagogies, their problems, their challenges. So they can like I said, they can subscribe to various study or interest groups on social media. They can also subscribe to certain mailers कि कहाँ पे कोई webinar हो रहा है इस topic का, तो उनको message आ जाएगा and they can attend. They can search or Google, they can recall something, they can participate in quizzes, or they can also annotate, explain certain things. Now we move to what is pedagogy and andragogy. अब pedagogy मुझे topic तो मिल गया, पर क्या हमें pedagogy की जरूरत है या we have to move to andragogy? Peda comes from the word pedia, which means children. यानी कि स्कूल वाले बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए जो भी चाहिए माध्यम, जिस तरह से हमें पढ़ाना है, वो pedagogy है. अगर मुझे कॉलेज के बच्चे पढ़ाने हैं, यूनिवर्सिटी के, that means I have adult learners, then I need to use andragogy. But I can blend pedagogy and andragogy. अब मेरे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, मेरे साथ grown up लोग हैं, adults हैं, वो कैसे पढ़ते हैं? Please, can anybody read this chart one by one comment each? Yes, madam. Be a bit loud. We learn best. Okay, next. We can do it with my hands. When I can do it with my hands. Okay, and next. I can consider all sides of the problem. Okay, next. When it is useful. Okay, next. When I am ready. All right, wonderful. Next. When I have the time. Okay, next. When it is about my problem. Wonderful. Next. When a trainer treats me with respect. Okay, next. When I hear what my friends say. Now, this is actually your classroom setup. I believe many people here on board with me are from university, colleges, or maybe are teaching +1, +2. That means we all have adult learners. This is how adult learners learn. This is what we need to have in our classroom setup. ये डिसाइड करेगा कि हमारी पेडागोजी क्या होनी चाहिए और हमें पेडागोजी से एंड्रागोजी पे अब शिफ्ट करना है. क्या मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्या मैं इंक्लूड करती हूँ? नाउ आई हैव वन एडल्ट लर्नर, आई हैव अ फीमेल इन माय क्लास फ्रॉम नाइजीरिया. वो तो सब इंडियन से अलग रह जाएगी और ऊपर से डिस्टेंट एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, मैं उसको मिल भी नहीं सकती हूँ. हाउ एम आई गोइंग टू स्पेशली रिस्पेक्ट हर? ये नहीं कि उसको आइसोलेट करके निकाल रही हूँ कि ये लड़की नाइजीरिया से है, ये मणिपुर से है या ये विलेज से है, बट हाउ एम आई इंक्लूडिंग देम? हाउ एम आई मेकिंग माई क्लास इंक्लूसिव? हाउ एम आई सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स? हाउ एम आई मेकिंग माई लेक्चर यूजफुल टू देम? हाउ आर दे लर्निंग बेस्ट? Are they doing something on their own? Am I initiating some activity? This all is what we need to initiate from now onwards if we are not doing that. अब andragogy में क्या है, pedagogy में क्या है? टीचर सेंटर में होता है, सब टीचर को देख रहे होते हैं, टीचर एक सेलिब्रिटी है. बट andragogy में आपके लर्नर्स हैं, वो सेंटर में आते हैं. The class is directed by them. They know where they stand. They also evaluate themselves. They come with their rich schema, with their background knowledge, with their own cultural consciousness, with their setting, with their experience, and they apply that in classroom while understanding your lectures, while learning from you. They already are very rich in resources.
let them talk. कई बार मैं अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ, मुझे इतनी चीजें पता चलती हैं क्योंकि मैं उस विलेज की नहीं हूँ, मैं हिमाचल से नहीं हूँ, मैं डाउन साउथ से नहीं हूँ. उनके पास इतना कुछ होता है that gives me good resource material to enhance my class lectures. From the next session onwards, perhaps I can use those materials, and even my co-learners are also learning that. So they experience through self-identification also, where they can see themselves in the center, where they can relate the subject with themselves. They will be open for any activity, any change, any novelty. उनको ये नहीं चाहिए कि एक विजुअल या इंटेलेक्चुअल डायरिया चल रहा है, रोज टीचर बेधड़क होके धाड़ क्लास में बोल रही है या अपना कैमरा ऑफ करके उनको सुना रही है लेक्चर पे लेक्चर और वो सुने जा रहे हैं. They are open to all novelty. They need to know more for their own betterment or effectiveness. क्या जिंदगी में उनको हेल्प करेगा. इवन जब आप एक प्रेजेंटेशन भी बनवाते हैं बच्चे से, उसको कोई क्विज में पार्टिसिपेट कराते हैं, कोई क्वेश्चनरी देते हैं, कोई ओरल नैरेटिव पे वर्क करने के लिए बोलते हैं, यू विल सी समवेयर दैट हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट इन हिज और हर लाइफ. दे नो कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरे में क्या कमी है, उस कमी को कैसे खत्म करना है वो शायद उनको नहीं आता. दैट दे कैन लर्न फ्रॉम द टीचर्स. But they know that this is their point, but they want to reach at point B somewhere. They have that innate desire to perform. सबको अच्छा लगता है कि मैं पार्टिसिपेट करूं, मेरा भी नाम हो, मैं क्लास का पार्ट हूं, भले पीछे से आऊं या आगे से आऊं या कहीं और से आऊं. Just give me a second. Hello everyone, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, You are ma'am. audible. So sorry, I had to leave for a while because my charging had gone, and just give me a while. I hope you can see the PPT. Yes, ma'am, we can see. Yes, ma'am. All right. So all our learners have this innate
desire to solve the problem of their own life, to make their learning relevant. Where can they apply? और इस सब के करने पे क्या होता है? There are internal mechanisms that are enhanced. Their self-esteem, their own recognition within the class, outside the class, in the society, at their own home. It also is related to their better quality of life. It enhances their confidence and self-actualization. So whenever you need to present in your class, you need to have the 3 Aristotelian rules of presentation. Your presentation needs to have ethos, pathos and logos. अब वो क्या है? क्या जो आप पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई दम है? आपकी तैयारी है? So credibility of the teacher and the text, your context, your syllabus. Are you convincing? Are you persuasive enough to touch your students, to impart something to them, some knowledge to them? Are you touching their emotions? Are you able to relate it to the current scenario, their life, or their own aspirations, goals, their thinking, their likes and dislikes? Do you have empathy and respect towards them? अब मैंने मान लो पीपीटी बनानी है या कभी बात करनी है और मेरी क्लास में अगर कोई मणिपुरी या नाइजीरिया से लड़की है, मुझे उसको अलग नहीं करना है, उसको नाम नहीं लेना है. But maybe, you know, if I have some, maybe I have to use some image. I can also use the image of some Manipuri girl there, or maybe a black girl there, not to show that I have a black girl in my class, not to abuse or, you know, degrade or derogate someone, but only to make the class inclusive. I'm not poking fingers. I am just including. Maybe I can tell them to tell me about their culture, or you know, what's the life there, what's the weather there. Maybe you are from you know, you're teaching geography. Why not involve them to tell about the geography of their country, of their land? Maybe language, maybe anything, maybe, you know, maybe dishes, cooking, food, cuisine, anything, maybe dresses. Then third aspect is logos. Now logos is when you're touching logic. You are improving their world understanding. क्या वो रीजनिंग एनहांस हो रही है? क्या वो चीज अप्लाई कर सकते हैं? क्या उनका लॉजिक हिट हो रहा है? अगर ये 3 चीजें आपके क्लासरूम सिनेरियो में आती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके पढ़ाने में आती हैं, आपसे बढ़िया टीचर कोई नहीं है. आपने सब काम कर लिया. ये आपके कह लो, you know, these are the part of your weaponry or your arsenal when you have to teach. But remember, the golden rule of teaching, especially the adults, is one who does the work learns the most. So you have to encourage your students to work. Collaboration में काम करें, pair में काम करें, अकेले काम करें, पर उनको कुछ ना कुछ लगाए रखो कि वो काम करें. उनसे काम करवाओ so that they learn more. This is what the teaching is all about, the pedagogy is all about. Now, we are going to soon begin with the next session this year, and that is also going to be online as we see the COVID scenario is like, or maybe we'll soon have blended also version. मान लो कभी physical classroom भी हो जाए, but still we can use the online resources. Give them, you know, in an asynchronous way. Tell them to do it at home, or maybe an activity on the weekend, or maybe, you know, plan one activity per unit. तो अगर आपको क्विज या पोल खिलाने हैं तो आप कहूट वेबसाइट यूज कर सकते हैं, सॉक्रेटिव, पेपरशाला, वूक्लैप, मीटिंग पल्स, देवेक्स, स्लाइडो, मेंटीमीटर एंड गूगल फॉर्म्स. So one of our participants is using Quizzes also. So if you want to let them play some books related to their subject, you can use Bluecat, Jeopardy Labs, Escape Rooms, Gather Town. So, you know, Gather Town में वो सब इकट्ठे होंगे, maybe एक library setting है, and you can see them where they are going. कोई कौन सी book ढूंढ रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है. Jeopardy Labs या Escape Rooms हैं. I have seen, you know, they use some reverse engineering also. From certain examples, you know, you make your students learn what is simile, what is metaphor, adjective कैसे बनता है, noun कैसे बनता है. So it's not only pertaining to literature, but these very, you know, websites are going to help even the people from sciences, from history, from psychology and elsewhere. So if you have to use cartoons, infographic or multimedia while teaching,
आपको खुद कार्टून बनाने हैं। अब कार्टून हम तो बना नहीं सकते, कोरल ड्रॉ पे बहुत मेहनत लगती है भाई, पर क्या कर सकते हैं? सो देयर इज अ वेबसाइट और ऐप, you can check these, Plotagon, Toondo, then there is Humans. वहाँ पे already avatars होते हैं या already cartoons बने होते हैं. You just need to select them. You need to select a setting, कैसा आपको environment चाहिए, फिर आप उनको collaborate करेंगे, उनको dialogues देंगे, and they can use that dialogues and you can create a classroom presentation. You can also use Prezi for that matter in order to create nice slides, nice corporate style professional slides for teaching. You can use Canva, Inkscape, then you have Glogster, you have Magic Pick to Chart also. In case you need to collaborate with your students like I did, I used Jamboard. You can use Flipgrid also, you can use Book Creator, then Stromboard, then Miro and Liveboard. But there are certain teaching ideas where we need to learn from the other teachers all around the globes. अब आपको बहुत सारी ये websites, imported websites, so called US generated, Canadian, Australian websites या apps दिखेंगी. They are doing hell lot of work in online teaching. आप एननबर्ग लर्नर पे जाएंगे, आपको पता चलेगा लेसन प्लान कैसे बनाना है, लेसन कैसे शुरू करना है, बीच में क्या क्या डाल सकते हो. आप कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड इनिशिएटिव अगर यूज करोगे, आपको पता चलेगा अगर आपको बीच में एथिक्स या वैल्यूज इन्वॉल्व करने हैं. जरूरी नहीं है कि मैं देखूं वो तो यूएस की वैल्यूज है. Why not? Maybe that very value I have to initiate in my political science or in my history or in my gender lecture. Maybe I can include that. If I have to, look into gender neutrality, ethnicity, then, justice and tolerance, then I can also talk about classroom diversity. In order to look into that, I can use learningforjustice.org. Now we move on to the next source. For my science friends who are from science background, they can use Cells Alive, Prep Magic, PhET Interactive Simulations, a wonderful website where you can show your students simulations of certain experiments, certain motions and other activity. Then teachertube.com, then Firefox, olabsedu.in, onlinelabs.in. Then you can also use Happy Little Farmer. Yes, Anji. Sorry to interrupt you, ma'am. Please time ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ. ठीक है, बस जी, we are going to wind up now. Thank you so much, ma'am. So you can read, history people, political science can use these very websites. The English can use the following ones. The mathematics can use the given ones. So I'll move to the next slide. I am just about to end only. I'm just giving you the online resources. I have some friends from theater department I got to know, someone from performing arts, physical education and yoga, foreign languages. So you can use these very online resources for your lectures. Few of these you already know, rest of them you can copy. You can take a screenshot. All right, thank you very much for participating and active listening. Maninder ma'am, please do one thing. Please send the Google form to them. This is the form, your exit ticket of this session. I request all of you to fill in your feedback. This is not feedback, it's good or bad. I'm not going to get into that. But this is your exit ticket. अगर हमें ये क्लासरूम बंद करना है तो ये 2 सवालों का एक लाइन में फटाफट से जवाब लिख दें. So what's your biggest takeaway from this session on pedagogy and communication skills? And what did you like the best in your presentation? Please do it now and submit it ASAP. Thank you very much. Thank you very much. If you have any questions, you can ask me now. You can fill in the exit ticket for exiting this session of today. I hope you liked the session, and you can reach out to me at jasmine18anand@gmail.com. You can also listen to my podcast on Spotify app with the name of Literary Shorts. Chairperson, Yeah. Dr. Mukesh. Yes. So
Ma'am, you have done a great job actually. You have to truly justified Thank the you very theme, much, Mukesh, whatever sir. has been given to you. It was a really very good mixture. This really I miss in so many teachers in this particular country कि जहाँ पर लोग जो है ना टीचिंग को केवल एक सिलेबस तक सीमित कर दिया है ना, they just stick to syllabus. People just cover the syllabus and they feel they are very good teachers, right? But it is not like that. Whatever you have covered, if a teacher really follow all these tactics, then certainly he will become a very good teacher. No one can say that I am not able to understand what he or she is teaching actually, right? So thank you very much. Thank you very much. And I am also thankful to organizers of the day who have given me opportunity to chair the session. Thank you very much. All right, thank you very much. And I can, I don't know, look, IQAC has a different feedback form for the session, but I gave you a different exit ticket. Both are different. Please do not confuse yourself with the two things. Yes, anybody who has any question or wants to say anything? Yes, ma'am. I'm Mandeep Kaur here. I'm All very, right. very much thankful to you, ma'am. I have learned how to indulge my students more in the class. Very much effective session it was, ma'am. Thank you so much for your guidance. We'll surely follow your guidelines in my class, ma'am. You will not follow my guidelines. You will execute your own, Manmeet. Yes, Right? ma'am. Like I have not, I was like I am not from education field. Like I have not gone through all these Bloom's taxonomy and all that. But now I have just come across all these things that how to implement them in my class. All Then right. I will somehow like I will try to implement all these things in my class. All Thank right, you, ma'am. that's wonderful. I'm glad you got something new, something novel, and you can initiate them within your classroom setup. Yes, anybody else? I'm sure everybody will agree with me that we have more arrows or weapons in our arsenal, as you said, Jasmine ma'am. All right, wonderful. I request Miss Navina Jinder to present formal vote of thanks. Ma'am, am I audible? Yes. Yes, you are very much audible. Thank you, ma'am. Good afternoon. I am Navina Jindal. I deem it a great honor to present this vote of thanks. It takes immense pleasure in extending my sincere thanks to our worthy resource person, Dr. Jasmine Anand, for enlightening us on the topic teaching pedagogies and communication skills. Ma'am, the lecture was really full of immense knowledge and so many interesting things to do and to learn from. All the EFT exercise, Jamboard activity, Tombola, the learning styles, all were really interesting and engrossing. The session has really helped us to understand our own selves also, our own learning styles. We will surely try to inculcate all these ideas and learnings in our teaching as well. Thank you, ma'am, for clearing our concepts and enhancing our understanding pertaining to the issue of teaching pedagogies and communication skills. Thank you, ma'am. I would also like to thank Principal Ma'am for leading and supporting this workshop. A special thanks goes to IQAC team who went an extra mile and worked hard under the guidance of Dr. Meenakshi and has made this event a success. Thank you. Last but not the least, a heartiest thanks goes to our co-learners, participants, whose presence has made this workshop really interesting and enjoyable. Thank you, everybody. Over to you, ma'am.